let's start our new chapter, that is the magnetic effects of electric current. In the last chapter we have studied about the electricity. Now we are going to study about the magnetic effects. What is the first topic? The first topic is magnetic field. Now let's see what do you mean by the magnetic field. The space around a magnet in which its effect can be experienced is called magnetic field. It means normally we have used the everyone has used the magnet in his childhood or in his school life. So what happened whenever we are getting the magnet, normally what we do, normally we play, we are going to stick two magnets together, or we take some iron, small iron pieces or big tables or something, or almirah, where we are going to stick, or generally small children also play with the magnets. So suppose if we are keeping a magnet at one place and something we are bringing near it, suppose हम लोग को ये खिला ले आए, some iron pieces, okay, or some iron toys or anything else. So when we are keeping it far from the magnet, it doesn't experience anything. As soon as we are bringing closer to the magnet, कोई भी चीज़ आयरन की चीज़ है जो मैग्नेट को क्या कर सकता है, जो अट्रैक्ट करता है, जिसमें मैग्नेट चिपक सकता है. इट मीन्स whichever the objects the magnet attracts, that objects when we are bringing closer to the magnet, जब उसके मैग्नेटिक फील्ड के पास हम लोग जब पहुंच जाते हैं, तब वो धीरे धीरे या तो शेक करता है और इट चेंजेस इज डायरेक्शन और इट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट. तो मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस होता है, जहाँ पे ये उसका जो इफेक्ट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम लोग फील करते हैं कि हाँ यहाँ पे पास में जाने से मैग्नेट अपने उसको खींच रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. So that is space around the magnet in which this effect is experienced, जितने दूर में हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, that is known as the magnetic field. And it is a vector quantity because it is based on the direction, and the SI unit is Tesla. It is named after the American engineer, that is the Nikola Tesla. The next is magnetic field lines. अब मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है, that we came to know, and that magnetic field is represented by some lines. उस मैग्नेटिक फील्ड्स को हम लोग कुछ लाइंस के माध्यम से यार we are representing it by using some lines, that is known as magnetic field lines. The imaginary lines representing magnetic field around a magnet are known as magnetic field lines. That only we are preparing some imaginary lines around the magnet, that is the magnetic field lines. Suppose we take one bar magnet. You can see here one bar magnet. At the right side it is written N, at the left side it is written as S. N represents north pole, S represents south pole, and we can see in the bar magnet how the magnetic fields lines. You can see the magnetic field lines around a bar magnet. Okay, you can see the directions. Okay, so this is the schematic diagram. Let's one example what we can give for magnetic field lines. If we take some small iron fillings, ठीक है, आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होंगे, and if we place near the magnet, it will arrange in some patterns. वो अपने आप एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे. That is also what magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. What is the properties? The first property you can see, they originate from north pole of a magnet and ends at the south pole. And this you can see in the diagram. जो bar magnet का जो magnetic field lines which we have seen in the last just now only, there also you can see from north pole it is going to the south pole. It starts from the north pole ending at the south pole. And these lines are closed and continuous curve. These lines are closed. वो एक दूसरे से means the lines are closed and वो continuous रहते हैं curve shape में. They are crowded near the poles. Poles means you have seen at the right side north pole or the left side south pole. So at the poles, if the magnetic field is strong, तो वो कोने में जो lines जो बाहर गए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा crowded होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. और same if there is a weak magnetic field, that lines will be far away. मतलब लाइन दूर दूर रहेंगे. Suppose strong field है तो you will see maximum lines 10-15 lines दिख जाएंगे. Weak है तो 2 से 3 line या 4 lines. Okay, that one you can see. And the field lines never intersect each other. जो field lines होते हैं they never intersect each other. वो एक दूसरे से कभी intersect cancel out नहीं करेंगे. Okay. Next is the magnetic field due to a current carrying conductor. अब एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, that one we will discuss. Okay. When the electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it.
The pattern of the magnetic field produced by a current carrying conductor depends on its shape. Now what happens? One second. Okay. सो व्हाट हैपेंस, सपोज कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है वो एक डेफिनेट मतलब कुछ शेप का बनेगा. ओके, नाउ अब वो किस शेप का बनेगा? द मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो शेप डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस शेप का है. जैसे जैसे अगर कंडक्टर, इफ यू आर टेकिंग स्ट्रेट लाइन, इफ यू आर टेकिंग राउंड शेप्ड कंडक्टर, इफ यू आर टेकिंग स्टार शेप कंडक्टर और सम सर्कुलर कॉइल, तो जिस टाइप का हम लोग लेंगे कंडक्टर, उसके हिसाब से उसका मैग्नेटिक फील्ड का भी शेप दूसरा होगा. ओके, दैट इज व्हाट इज मेंट इन दिस पैराग्राफ. ओके, now let's see the magnetic field due to a current through a straight conductor. Now we are talking about a straight conductor. Okay, one straight conductor is there. Now let's see what happens to the magnetic field. The magnetic fields around a straight current carrying conductor are concentric circles. Concentric circles means what? The circles with the common center, जिसका center same होता है, and just you can see the radius is going on increasing. The magnitude of magnetic field. See, the current is represented by I. Resistance, you know, represented by R. In the same way, the magnetic field is represented by capital B. The magnetic field is represented by capital B. So the magnitude of magnetic field produced by, अब जो straight carrying conductor में जो produce होगा magnetic field, that is directly proportional to the current. First, what is the first point? Directly proportional to the current passing. जो वायर है, अपना straight वायर था, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा था, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा. दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. वी हैव गिवन एज इक्वेशन 1. नाउ सेकेंड इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर. See, this is what the concentric circle. You can see the I, that is the current flowing in the straight current carrying conductor. You can see the magnetic fields, ये जो गोल गोल concentric circles हैं, this is the magnetic field. अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. दैट इज वाई यू कैन सी द सेकेंड इक्वेशन दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिक्रीज होगा. जैसे जैसे अगर हम पास के डिस्टेंस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. दैट इज वाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. B is inversely proportional to R. That is why we have given the box and given as, we have written the box and we have given as equation 2. This is the concentric field lines around a straight line current carrying conductor. Okay, now first equation was B is directly proportional to I. Second equation was B is inversely proportional to R. If you combine both the equation, what you'll get? B is proportional to 1 by R. Now see, if the direction of the current in a straight wire conductor is known, अगर हम लोगों को करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन मालूम है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जस्ट नाउ ओनली विच वी हैव सीन, दैट वन ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन. उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं. दैट इज हाउ मच, दैट इज बाई यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. So what do you, now the new question arises, that what do you mean by Maxwell's right hand thumb rule? That one we will discuss in our next video. Hope you understood. Thank you.